Hi everyone, welcome to Psychology with Sarah. I am Sarah Gupta and in today's video I am going to break down somatic symptom and related disorders. So if you've ever tried reading the DSM-5, you know how tough the language is, there's so much medical jargon and it's really hard to understand, but don't worry. In today's video I'll break it down in a very simple and easy to understand language. So, these disorders involve people experiencing significant distress due to physical symptoms or having excessive illness anxiety. So, I'll explain each disorder in detail and highlight the differences between DSM-4 and DSM-5 and make it really easy for you to grasp. So, stay tuned and let's get started. Okay, let's start with an overview. So, in this category, we'll study somatic symptom disorder, illness anxiety disorder, conversion disorder, जिसे हम अब हम functional neurological symptom disorder कहते हैं, psychological factors affecting other medical conditions, factitious disorder, and then other specified या फिर unspecified somatic symptom and related disorders. So इन सारे disorders में जो common feature है is that कि there is prominence of somatic symptoms या फिर illness anxiety and उसमें बहुत significant distress and impairment cause हो रहा है. So because इन सबको physical symptoms आ रहे हैं, right? So these individuals are usually seen in primary care या फिर medical settings and less commonly in psychiatric settings. एंड जो DSM-5 है दैट इज रिकंसेप्चुअलाइज दीज डिसऑर्डर्स फ्रॉम द बिकॉज DSM-4 में इन्हें सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के अंदर आते थे राइट, बट अब इनको सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर के अंदर आ गया ताकि ये और क्लिनिकल यूजफुल हो टू नॉन साइकाइट्रिक क्लिनिशियंस. ओके, नाउ लेट्स सी कि मेजर चेंजेस क्या आए हैं इन DSM-5 की क्लासिफिकेशन. तो पहले DSM-4 में दे वर टर्म्ड एज सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स एंड नाउ दे आर रिप्लेस्ड विद सोमैटिक सिम्पटम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स इन द DSM-5 ताकि ज्यादा क्लैरिटी हो और यूजेबिलिटी हो. Because somatoform disorders में there were overlap and इससे बहुत confusion हो रही थी and there was difficulty in diagnosis. And also in the DSM-5 जो number of disorders हैं and सब categories हैं they are reduced ताकि और diagnostic clarity हो. So there is also shift in diagnostic focus because DSM-4 में focus था कि हम पे symptoms present है और उनका कुछ medical explanation नहीं मिल रहा है. But DSM-5 में our focus is on seeing कि क्या distressing symptoms present हैं and क्या उनसे associated abnormal thoughts, feelings and behaviors present हैं ताकि एक mind body dualism avoid हो and stigma avoid हो और reduce हो that the patients are facing. And also recognize medical conditions do not exclude a mental disorder diagnosis. इसका मतलब क्या है कि एक person can have a medical condition also alongside a somatic symptom or related disorder. Let's start with discussing somatic symptom disorder or SSD. So this is the main diagnosis in this category and यहाँ पे हमारा focus है on the presence of symptoms and the way एक individual उन्हें perceive कर रहा है, interpret कर रहा है, then respond कर रहा है. So हम पे symptoms we have distressing somatic symptoms also and we have abnormal thoughts, feelings or behaviors related to those symptoms also. So this avoids the issue of whether symptoms are medically explained or not. यहाँ पे associated features क्या हैं कि there's increased focus on the affective, cognitive and behavioral responses. Affective होते हैं आपके emotional, cognitive होते हैं your thought based and behavioral responses. And associated feature में एक और क्या है कि may be accompanied by a recognized medical condition. मतलब even if you have a recognized medical condition, you can still be diagnosed with somatic symptom disorder. Okay, our next disorder is illness anxiety disorder. So this was previously part of hypochondriasis in DSM-4, but 2/3 to 3/4 of hypochondriasis cases are now categorized under somatic symptom disorder, and जो remaining cases है, they are covered under illness anxiety disorder. And illness anxiety disorder मतलब कि there is high health anxiety, पर कोई prominent somatic symptoms present नहीं है. अब illness anxiety disorder को basically हम एक somatic symptom disorder भी मान सकते हैं और anxiety disorder भी मान सकते हैं. But DSM में it is listed with somatic disorders for clinical utility and it is commonly seen in medical settings. Okay, moving on to convergent disorder जिसे अब हम functional neurological symptom disorder भी कहते हैं. तो इस disorder में क्या होता है? There are neurological symptoms. Neurological symptoms होता है paralysis, blindness, seizures. पर इनके लिए actually कोई physiological cause नहीं है. मतलब in our body if paralysis or blindness something like this occurs, there are certain pathophysiological processes will occur. पर अगर कोई actual physiological cause नहीं है and you are getting these neurological symptoms, then we term it as convergent disorder. अब इसके लिए एक नई approach ली गई है in the DSM-5. पहले क्या था कि this was an exclusion diagnosis, मतलब you have to rule out all other medical causes and only then you could be diagnosed with this. But now it is a rule in diagnosis. मतलब if we see positive clinical signs, then we can confirm this diagnosis. And presence of a neurological disorder does not exclude diagnosis. And psychological stressor is not required जैसे DSM-4 में required होता था. Psychological factors affecting other medical conditions. So there are certain psychological या behavioral factors that negatively impact a medical condition and they can increase your risk of suffering या death या disability. Like we have anxiety जिससे asthma worsen होता है
या अगर कोई इंसान मेडिकल ट्रीटमेंट से एडहियर नहीं कर रहा है तो। नाउ कमिंग टू फैक्टिशियस डिसऑर्डर। फैक्टिशियस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय कोई इंटेंशनली फॉल्सिफाई कर रहा है या एग्जैजरेट कर रहा है सिम्टम्स ताकि लोगों को लगे कि वो सिक है एंड दे अज्यूम द सिक रोल। सो अब या तो ये इंसान खुद को कर रहा है विच इज कॉल्ड इम्पोज्ड ऑन सेल्फ, जिसे हम पहले मंचाउजन सिंड्रोम कहते थे, और कोई और इस इंसान पे इम्पोज कर रहा है, यूजुअली इट इज अ केयर गिवर, जिसे हम पहले मंचाउजन बाय प्रॉक्सी कहते थे। But now it is classified within somatic symptom and related disorders because of the common feature of illness-related behaviors and beliefs. Moving on to other specified and unspecified somatic symptom and related disorders. So other specified में हम पे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे पूरा क्राइटेरिया नहीं मीट हो रहा बट सम क्राइटेरिया मीट हो रहा है फॉर मे बी SSD और इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। एंड अनस्पेसिफाइड हम कब यूज करते हैं व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू मेक अ स्पेसिफिक डायग्नोसिस। इसके अलावा वी आल्सो हैव स्यूडोसाइसिस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड फॉल्स प्रेगनेंसी, ये भी हमारा स्पेसिफाइड के अंडर आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस कोमॉर्बिडिटी। सो सबसे पहले कोमॉर्बिड मेंटल डिसऑर्डर्स कैन एग्जिस्ट अलोंग विद सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर्स। यू हैव डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड कुछ केसेस में इवन डेल्यूजनल डिसऑर्डर्स। एंड दूसरी बात इज रिस्क फैक्टर्स या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। सो पहला इज जेनेटिक या बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी। मे बी यू ऑलरेडी हैव इंक्रीज पेन सेंसिटिविटी जेनेटिकली, या फिर यू हैव एक्सपीरियंस अर्ली ट्रॉमा, अब्यूज, नेग्लेक्ट इन लाइफ। There is medical iatrogenesis, मतलब excessive medical tests have been done on you and that is reinforcing your illness belief. फिर learning factors, maybe there is reinforcement of your sick role by some people जो बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि you are sick ऐसे। फिर there is cultural influences also. So based on your culture, कुछ cultures होते हैं जहाँ पे there is a lot of stigma against mental illnesses. तो वहाँ पे even psychological distress will be expressed in physical symptoms. इट इज ऑल्सो मेडिकल सिस्टम पे डिपेंड करता है, जैसा आपके कल्चर में मेडिकल सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सिम्टम्स रिकॉग्नाइज करोगे एंड ट्रीटमेंट सीख करोगे। Coming towards the end of our video, let's see a summary of the key features. So we have SSD, जिसमें there is distressing physical symptoms और एक excessive thoughts और behaviors are related to them. There is illness anxiety disorder, जहाँ पे इंसान को बहुत ज़्यादा वरी है about serious illness despite कोई symptom नहीं है या बहुत little symptoms है। फिर conversion disorder, जहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं पर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं एग्जिस्ट कर रही। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग मेडिकल कंडीशंस, मतलब कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो वर्सन कर रहे हैं या इंटरफेयर कर रहे हैं विद अ मेडिकल कंडीशन। फिर भी फैक्टिशियस डिसऑर्डर की इंटेंशनल फॉल्सिफिकेशन रही है ऑफ सिम्टम्स ताकि इंसान सिक रोल अज्यूम कर पाए। एंड देयर इज स्पेसिफाइड या अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स जहाँ पे पार्शियल क्राइटेरिया या तो मीट हो रहा है या फिर अनक्लियर केसेस। लेट्स डिस्कस द क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस आल्सो। So somatic symptom disorders, they present primarily in medical settings. इसलिए it is very challenging for non-psychiatric clinicians जिनको इसकी awareness नहीं है। DSM-5 के changes emphasize करते हैं एक positive symptoms को rather than diagnosing someone with somatic symptom disorders just because एक medical explanation नहीं है। You also have to see if positive symptoms actually present है इस चीज के लिए। फिर somatic symptoms often co-occur with psychological distress and psychiatric disorders. And cultural context plays a crucial role in symptom कैसे present हो रहे हैं and diagnose हो रहे हैं। Thank you for watching Psychology with Sarah. I hope this breakdown made the DSM-5 content easier to understand. Somatic symptom and related disorders can be complex, but once you get the main ideas, they start making a lot more sense. If you found this video helpful, like, share and subscribe for more psychology content. If you have any questions or want me to cover a specific topic, drop a comment down below and I'd love to hear from you. See you in the next video. Bye!